students, the next chapter which we are going to study in our academic science book class 4 on page number 38 is chapter number 7 force and machines यानी कुवत और मशीनें. Dear students, first of all we'll know that what is force यानी कुवत क्या है. Whenever we push or pull an object, it causes the object to come into contact with other objects. This push or pull is called a force. जब भी किसी शय पर कोई धक्का लगाया जाता है या इसे खींचा जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि इस चीज़ के साथ दीगर अशिया का टकराव हो जाता है. इसे धकेलने या खींचने को कुवत कहा जाता है. There is an interaction between two objects when a force is applied on each of these objects. दो चीज़ों के माबीन तब ही बाहमी तामुल होता है जब उनमें से हर एक शय पर एक कुवत का इतलाक होता है. If a door is pulled to open it, it is an example of force. यानी अगर दरवाज़ा खोलने के लिए उसे खींचा जाए तो ये भी कुवत की मिसाल है. If a book is pushed to the other corner of the desk by a student, the book falls off the edge and gravity pulls it to the floor. The student picks up the book and put it back on the desk. This is an example of force. यानी अगर किसी तालिब इल्म के ज़रिए किताब को मेज़ के दूसरे कोने पर धकेल लिया जाए तो किताब किनारे से गिर जाती है और कशिश शकल इसे फर्श की तरफ खींचती है. तालिब इल्म किताब उठाकर मेज़ पर रख देता है. ये सब भी कुव्वत की एक मिसाल है. टिप डेट फोर्स इज़ मेजर्ड इन न्यूटन एंड नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन. यानी जिस तरह हम वज़न को केजी और पानी को लीटर्स वगैरह में मेजर करते हैं इसी तरह हम फोर्स को न्यूटन्स में मेजर करते हैं और न्यूटन का यूनिट एक फेमस साइंसदान सर आइजैक न्यूटन की बिना पर रखा गया है. Ways in which motion of an object can be changed. वो तरीके जिनके ज़रिए चीज़ों की हरकत को बदला जा सके. The second law of motion states that a force which is acting on the object will change its velocity by changing either its speed or its direction or both. So we can change the state of motion of an object by changing its speed, its direction of motion or both. When the speed of the object is changing, it is called velocity. When the velocity of an object is changing, it is called acceleration. प्यारे बच्चों, इसमें यह कहा गया है कि हरकत के दूसरे कानून में एक कुव्वत जो किसी शय पर अमल कर रही होती है वो इसकी रफ्तार या सिमत या दोनों को तब्दील करके उसकी वेलोसिटी को बदल सकती है. लिहाजा हम किसी शय की रफ्तार, उसकी सिमत या दोनों को तब्दील करके किसी भी हरकत की हालत को तब्दील कर सकते हैं. जब किसी शय की रफ्तार बदली जाती है तो उसे वेलोसिटी कहते हैं. जब किसी चीज़ की वेलोसिटी में तब्दीली आ रही हो तो उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है. Dear students, move towards page number 39. The topic is force can change the position and the shape of an object. यानी कुव्वत चीज़ों की जगह और शक्ल बदल सकती है. Applying force on an object causes the object to change its position, shape or size. यानी किसी शय पर ज़बरदस्ती कुव्वत लगाने से उस शय की शक्ल, जगह या साइज़ को तब्दील किया जा सकता है. This happens while the objects start moving, stop moving, accelerating or decelerating. ऐसा तब होता है जब वो शय हरकत करना शुरू करे, हरकत करना छोड़ दे और रफ्तार तेज़ करे या रफ्तार कम करती हो. When there is an interaction between two objects, they exert a force on each other. जब दो चीज़ों के माबीन तामुल होता है तो वो एक दूसरे पर कुव्वत लगाते हैं. These exerted forces are mostly equal in size but opposite in direction. But when one of these forces is more in quantity than other, they will change the position and shape of an object. इसमें यह कहा गया है कि जब दो चीज़ों के माबीन तामुल होता है तो एक दूसरे पर वो कुव्वत लगाते हैं. ये ज़ोरदार कुव्वतें ज़्यादातर साइज़ में बराबर होती हैं लेकिन सिमत में मुखालिफ हैं. लेकिन जब इन कुव्वतों में से कोई एक दूसरे के मुकाबले में मिकदार में ज़्यादा हो तो वो उस शय की हैसियत और शक्ल को तब्दील कर देगी. The next topic is greater the force, greater the change in the distance covered by the object. यानी जितनी ज़्यादा कुव्वत होगी उतने ही चीज़ के फासले में ज़्यादातर तब्दीली आएगी. When a moving object exerts an equal pressure on the resting object will change its distance covered by the moving object. यानी अगर एक हरकत करता हुआ जिस्म किसी साकिन जिस्म पर मुसलसल दबाव डालता है तो साकिन जिस्म उस चीज़ की वजह से अपना फासला तब्दील कर देगा. The greater the force, the greater the change will be covered by the object in terms of distance. यानी कि ताकत जितनी ज़्यादा होगी फासले के लिहाज से भी उतनी ही ज़्यादा तब्दीली देखी जाएगी. Newton's third law states
For every action of force there is an equal and opposite reaction. نیوٹن کے تیسرے قانون میں کہا گیا ہے کہ ہر عمل کی قوت کے لیے ایک مساوی اور مخالف رد عمل کی قوت ہوتی ہے. Dear students, move towards page number 14. Okay. These forces always act on different objects. یہ forces ہمیشہ یعنی یہ قوت ہمیشہ مختلف objects پر ایکٹ کرتی ہے، اثر کرتی ہے، عمل کرتی ہے. Whenever a force acts on object in much increased amount than normal, the object will show an equal reaction but in opposite direction, and this is why the object will cover greater distance. جب بھی کوئی قوت کسی جسم پر معمول سے کہیں زیادہ مقدار میں عمل کرے تو جسم برابر رد عمل ظاہر کرے گا لیکن مخالف سمت میں، اور اسی وجہ سے جسم زیادہ فاصلہ طے کرے گا. Tip did gravity is a natural force that pulls everything down towards the earth. پیارے بچوں، اگر آپ نے غور کیا ہو جب بھی ہم کسی چیز کو اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہی آتی ہے. تو یہ نیچے کی طرف کھینچنے والی فورس کو گریوٹی کہتے ہیں، اور گریوٹی ایک نیچرل فورس ہے. Some objects can return into their original shape after the release of force. یعنی کچھ چیزیں طاقت کے اطلاق کے بعد اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آتی ہیں. These are some objects that degrade their shape after the powerful force is applied, but there are some objects that have flexibility in them. They can return to their original shape after the force is released. Some of these flexible objects are rubber, elastic, balloon, and spring, etc. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ طاقت کے استعمال کے بعد اپنی شکل کو خراب کر دیتی ہیں، لیکن کچھ دوسری چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں لچک موجود ہوتی ہے. وہ طاقت کے چھوڑنے کے بعد اپنی اصلی شکل میں واپس لوٹ آتے ہیں. ان میں سے کچھ لچکدار اشیاء ربڑ، الاسٹک، غبارے اور اسپرنگ وغیرہ ہیں. Dear students, let's move towards page number 41. The topic is speeds and its relation with distance. یعنی رفتار اور اس کا فاصلے سے تعلق. The speed is the rate of change of distance in unit time. یونٹ وقت میں فاصلے کی تبدیلی کی شرح کو رفتار کہتے ہیں. The speed is dependent directly on the distance. یعنی رفتار براہ راست فاصلے پر انحصار کرتی ہے. If a bike A covers a distance of 10 km in an hour and the bike B covers a distance of 20 km in the same time, the speed of bike B will be more than bike A. The formula of the speed is equal to distance by time. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک موٹر سائیکل A ایک گھنٹے میں 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے اور دوسری موٹر سائیکل B اسی وقت میں 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تو موٹر سائیکل B کی رفتار موٹر سائیکل A سے زیادہ ہوگی. رفتار کا فارمولا درج ذیل ہے. رفتار جو کہ ہمارے پاس برابر ہے فاصلہ ڈیوائیڈڈ بائی وقت. The distance is measured in meters or kilometers and the time is calculated in seconds, minutes and hours. یعنی فاصلہ میٹر یا کلومیٹر میں ناپا جاتا ہے اور وقت کا حساب سیکنڈ، منٹ اور گھنٹوں میں لگایا جاتا ہے. Tip date: The first scientist to measure speed as distance over time was Galileo. یعنی وہ سائنسدان جس نے اسپیڈ کو پہلے دفعہ ڈسٹینس بائی ٹائم پہ میجر کیا تھا وہ تھا گیلیلیو. Dear students, do you know magnetism is a type of force? A magnet might pull an object toward it or push it away. یعنی مقناطیس کی قوت بھی ایک فورس ہے، ایک قوت ہے. ایک مقناطیس اپنی طرف چیزوں کو کھینچ بھی سکتا ہے اور انہیں اپنے آپ سے دور دھکیل بھی سکتا ہے. تو مقناطیس بھی ایک قوت ہوئی. The next topic is simple machines یعنی سادہ مشینیں. The machines that makes our work easy are simple machines. وہ مشینیں جو ہمارے کام کو آسان بناتی ہیں انہیں سادہ مشینیں کہتے ہیں. There are several simple machines that help us: lever, wheel and axle, including inclined plane, wedge, pulley and screw are most commonly used simple machines. یعنی کئی سادہ مشینیں جو ہماری مدد کرتی ہیں لیور، پہیا، ایکسل، انکلائنڈ پلین، ویج، پلی اور اسکریو عام طور پر بطور سادہ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان سب کی پکچرز آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے. Now let's move towards page number 42. Dear students, do you know a scissor is a good example of a complex machine that uses a combination of two simple machines to make work simpler. یعنی scissor ہمارے پاس complex مشین کی ایگزامپل ہے. یہ کمبینیشن ہے دو قسم کی مشینوں کا جو کہ ہمارے کام کو آسان بناتی ہے. Simple machines make work easier. یعنی سادہ مشینیں کام کو آسان بناتی ہیں. Simple machines make our work easier, allowing us to push or pull over increased distances.
یعنی سادہ مشینیں ہمیں فاصلہ آگے بڑھانے یا آگے بڑھنے میں مدد دے کر کام کو آسان کر دیتی ہیں۔ Machines make work easier by changing the size of force, direction of force, or distance the force acts on. The following are some examples of machine that helps to make our work easier. یعنی مشینیں قوت کا سائز، قوت کی سمت یا قوت کے فاصلے طے کر کے کام کو آسان بناتی ہیں۔ درجیل کچھ سادہ مشینیں ہیں جو ہمارا کام آسان بناتی ہیں۔ Number first is lever. A lever is a rigid tool capable of rotating on a point on itself. Fulcrum is a point or support on which a lever pivots. Levers can also lift objects. A seesaw is a lever. یعنی ہمارے پاس لیور ایک سخت آلہ ہے جو خود کو ایک نقطے پر گھماتا ہے۔ فلکرم وہ نقطہ یا سہارا ہے جس پر ایک لیور محور ہوتا ہے۔ لیور اشیاء کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ سیسا بھی ایک قسم کا لیور ہے۔ ویل اینڈ ایکسل یعنی پہیہ اور ایکسل. It makes work easier by moving objects across distances. The wheel turns with the axle causing movement. For example, on a wagon, a container rests on the top of the axle. Wheelbarrow is also its example. یعنی یہ چیزوں کو زیادہ فاصلوں پر منتقل کر کے کام کو آسان بناتا ہے۔ ایکسل کے نتیجے میں پہیہ حرکت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ویگن میں ایک کنٹینر ایکسل کے اوپر رہتا ہے۔ ویل بیرو بھی اس کی مثال ہے۔ ٹپ ڈیٹ، ٹوائے کارز، آفس چیئرز اینڈ بائی سائیکل آر ایگزامپلز آف ویل اینڈ ایکسل. یعنی کھلونوں والی گاڑیاں اور آفس چیئر، بائی سائیکل، یہ سب ہمارے پاس ویل اور ایکسل کی مثالیں ہیں۔ The next one is inclined plane. It is a flat surface that is inclined so it can help move objects across distances. A common inclined plane is a ramp. یعنی یہ ایک ہموار سطح ہے جو ڈھلوان ہے، لہٰذا اس سے اشیاء کو دور دراز منتقل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ریمپ ایک عام انکلائنڈ پلین ہے۔ Dear students, move towards page number 43. Wedge. Instead of using the smooth side number 43. Wedge. Instead of using the smooth side of the inclined plane to make work easier, we can also use the pointed edge to do other kinds of work. When we use the edge to push this apart, this movable inclined plane is called a wedge. An axe blade is an example of a wedge. یعنی کام کو آسان بنانے کے لیے انکلائنڈ پلین کی ہموار سطح کو استعمال کرنے کے بجائے ہم دوسری قسم کے کام کرنے کے لیے نوکدار ویجز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہم چیزوں کو الگ کرنے کے لیے نوکدار شے کا استعمال کرتے ہیں تو اس حرکت پذیر انکلائنڈ پلین کو ویجز کہا جاتا ہے۔ کلاڑی کا بلیڈ ویج کی ایک مثال ہے۔ پولی. Instead of an axle, a wheel could also rotate a rope cord or belt. یعنی ایکسل کے بجائے پہیہ ایک رسی، ہڈی یا بیلٹ کو بھی گھما سکتا ہے۔ This variation of the wheel and axle is called pulley. پہیے اور ایکسل کی یہ حالت پلی کہلاتی ہے۔ In a pulley, a cord wraps around a wheel. ایک پلی میں پہیے کے ارد گرد ایک ڈوری لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ As the wheel rotates, the cord moves in either direction. پہیے کے گھومنے کے ساتھ ہی ڈوری دونوں طرف بڑھ جاتی ہے۔ For example, on a flagpole, a rope is attached to a pulley to raise and lower the flag more easily. مثال کے طور پر ایک فلیگ پول پر رسی کو پلی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تاکہ جھنڈا زیادہ آسانی سے اونچا اور نیچا کیا جا سکے۔ The next one is screw. When we wrap an inclined plane around a cylinder, its sharp edge becomes other simple machine which is a screw. جب ہم کسی انکلائنڈ پلین کو سلنڈر کے گرد لپیٹتے ہیں تو اس کا تیز دھار حصہ ایک اور آسان مشین بن جاتا ہے جسے ہم اسکریو کہتے ہیں۔ A metal screw beside a ramp is actually another kind of inclined plane. یعنی ریمپ کے ساتھ لگے ہوئے دھات کا اسکریو در حقیقت انکلائنڈ پلین کی ایک قسم ہے۔ A function of a screw is that it can easily turn itself to move through a solid block of wood. کسی اسکریو کا یہ کام ہے کہ وہ لکڑی کے ٹھوس بلاک کو آسانی سے حرکت دے سکتا ہے۔ Dear students, let's move towards the exercise یعنی مشق. Tick the correct answer. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ Number first is when the speed of an object is changing, it is called. جب کسی شے کی رفتار بدلتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں Number A speed رفتار, Number B velocity, Number C distance, Number D acceleration. So the correct option is B velocity. Number 2, when there is an interaction between two objects, they exert this. جب دو چیزوں کے مابین کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ اس پر لاگو کرتے ہیں۔ A. force, B. pressure یعنی دباؤ، C. work.
डी इलास्टिसिटी यानी लचक। सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स यानी ए ऑप्शन कुव्वत। Dear students, move towards page number 44. Number third is the greater the force, the greater the change will be covered by objects in terms of. कुव्वत जितनी ज़्यादा होगी उसके लिहाज से किसी भी चीज़ का बदलाव ज़्यादा हो जाएगा। ए स्पीड यानी रफ्तार, बी टाइम यानी वक्त, सी फोर्स यानी कुव्वत, डी डिस्टेंस यानी फासला। तो मतलब जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी यानी फासला। Number fourth one is these objects retain their original shape after the force is applied. कुव्वत के इस्तेमाल के बाद ये अशिया अपनी असल शक्ल बरकरार रखती हैं। नंबर ए रिजिड यानी सख्त, बी ओरिजिनल यानी असल, सी सॉलिड यानी ठोस, डी इलास्टिक यानी लचकदार। तो वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स के बाद अपनी असल शक्ल बरकरार रखती हैं वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं यानी लचकदार ऑब्जेक्ट्स होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नंबर फिफ्थ इज़ अ कॉमन इंक्लाइंड प्लेन इज़ यानी एक सादा इंक्लाइंड प्लेन है। ए काट टोकरी, बी सीजर्स कैंची, सी रैम्प और डी सी सॉ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ इंक्लाइंड प्लेन में हमने पढ़ा था कि इंक्लाइंड प्लेन में हमारे पास रैम्प आती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ रैम्प यानी सी। क्वेश्चन 2 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली यानी दर्जेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। डिफाइन फोर्स, फोर्स की वजाहत करें। नंबर 2 हाउ फोर्सेस कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कुव्वतें किसी शय की जगह को कैसे तब्दील कर सकती हैं। नंबर 3 व्हाट आर इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, यानी इलास्टिक अशिया क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में हमने अभी पढ़ा है, आप सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर आपने दे देने हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी फासले के साथ रफ्तार का क्या ताल्लुक है। डिफाइन सिंपल मशीन, सादा मशीनों की वजाहत करें। हाउ डज अ व्हील एंड एक्सेल वर्क, किस तरह पहिया और एक्सेल काम करते हैं। डिफाइन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन की तारीफ करें। व्हाट इज स्क्रू, स्क्रू क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन लेवर एंड पुली, लेवर और पुली के दरमियान फ़र्क मालूम करें। नंबर 3 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, दर्जेल सवालात के जवाब तफसील से दें। नंबर 1 इज़ डिफाइन फोर्स बाय गिविंग एग्जांपल, यानी मिसालें देकर ताकत की वजाहत करें। आपने बताना है कि फोर्स पुश और पुल होता है जब हम किसी चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं, और फिर आपने इसकी एग्जांपल्स देनी है। नंबर 2 इज़ इन्वेस्टिगेट द वेज इन विच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज, किसी चीज़ की हरकत को जिन तरीक़ों से तब्दील किया जा सकता है उन तरीक़ों को तलाश करें। नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेट हाउ फोर्स कैन चेंज द पोजीशन एंड द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ताकत किसी शय की हैसियत और शक्ल को किस तरह तब्दील कर सकती है, अमली इज़हार करें। नंबर 4 इज़ एक्सप्लोर द ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, इस चीज़ को तलाश करें जो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से शय के फासले में ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीली लाए। नंबर 5 इज़ डिफाइन स्पीड एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशनशिप विद डिस्टेंस, यानी रफ्तार की वजाहत करें और फासले के साथ इसका ताल्लुक वाज़ेह करें। नंबर 6 इज़ डिफाइन सिंपल मशीन्स बाय गिविंग एग्जांपल्स एंड कॉमनली यूज मशीन्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, माहौल में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली मशीनों की मिसालें दें और सादा मशीनों की तारीफ करें। नंबर 7 इज़ एक्सप्लेन हाउ सिंपल मशीन्स मेक द वर्क ईजियर, वाज़ेह करें कि किस तरह सादा मशीनें काम को आसान बनाती हैं। सादा मशीनों में हमने लीवर वगैरह, व्हील, एक्सेल के बारे में पढ़ा था, तो आपने उनका हवाला देते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।